Hello and welcome to the stream. Today we are going to do top 50 Google interview questions, lead code list. So let's start the questions actually. This is the first question that we're going to solve today. Let's also open up OneNote just for the. Alright, so first question is a hard question. Welcome to the stream with another hard question. Um, So this is something that I've realized with Google itself that Google asks a lot of hard questions rather than asking medium level questions, which is justified considering how big of a company it is. So given an array of string words and a width max width, just a quick update that I might also have to go for a small 15-minute potty break during the stream. Given an array of string words and a width max width, format the text such that each line has exactly max width characters and is fully left and right justified during this. Okay, so you should pack your words in a greedy approach. Pack as many words as possible and then pad the extra space when necessary so that each line has exactly max width characters. Extra spaces between words should be distributed as evenly as possible. If the number of spaces on a line does not divide evenly between two words, the empty slot on the left will be assigned more spaces than the slot on the right. For the last line of the text, it should be justified and no extra space is inserted between the words. A word is defined as a character. Okay. So, this is not the first time I'm looking at this question. Of course, I have seen this question somewhere, maybe. तो यहाँ मैक्स विड्थ फॉर एग्जांपल 16 दिया है. अब तुमको ये वर्ड्स लगाने हैं तो how will you do that? Let's think for some approach. तो मैंने ये क्वेश्चन पहले कभी देखा है लेकिन I have no idea how to solve it because I haven't checked the answer ever. It says that you need to pack your words in a greedy approach. Pack as many words as you can in each line, so that each line has exactly max width characters. मे बी यहाँ पे इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. साइंस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड वेल इनफ टू एक्सप्लेन टू अ कंप्यूटर. आर्ट इज एवरीथिंग एल्स वी डू. अब इसमें कुछ हो रहा है क्या ऐसा जो कि बहुत ही क्रेजी हो? आई मीन मैं सोच रहा हूँ कि जस्ट ग्रीडी तरीके से नहीं कर सकते क्या इसको? हम्म. Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do. इस वाले एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं थोड़ा सा. Temp equals to empty array for word and words. Let's just say temp dot append
length of word. Return uh return 10 but print 10. Let's try this out. It says 10 is not an expected value for the return type, which is a list. Okay, then we just return an empty list for now. Yes, so we have 7242 as a something something. Max width is 20 in this case. Max width is 20, which means जब तक 20 नहीं हो, which is 7 to 9, 9 4 13 to 15, अब 10 से 20 हो रहा है तो इनवर्ट्स को इधर रख दो, फिर 10 4 14 और 6 20. नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ 10 और 4 हो पाएगा, 6 को अलग रखो, 6 2 8 7 15 एंड 1 16, और 4 वर्ड्स हो गए तो 3 गैप हो गए होंगे अब तक, 1 2 3, तो 19 हो गया, तो नेक्स्ट नहीं हो सकता, तो 9 फिर 3 2 विच मेक्स इट 14 एंड 10 नहीं आ सकता, लाइट लो, फिर 10 4 14 एंड 2 2 6. तो isn't it how it's supposed to be? अच्छा नहीं, बट मैं तो ऐसे ही करने की सोच रहा हूँ, 7242 10 4 6271 9321. एवरीथिंग में कितने होते हैं? Everything has 10 letters. Else has 4 letters. V has 2 and do also has 2. Now the max width is supposed to be 20. So max width is going to be 10 dash 4 dash 2, which makes it 11 for 15 16 17 18, and then dash 20 can't be here, so next is there. तो ये तो greedy approach हो गई. I think this can be solved using just the greedy approach. But I don't think greedy से solve हो जाएगा क्या ये? अगर ये सिर्फ greedy से होने वाला है तो फिर ये hard level क्यों है ना? अगर ये greedy से ही होने वाला है then why is it tagged as hard? Array string simulation, why is it tagged as hard then if it is just a simple greedy approach? I don't know. Anyways, this is my answer for now. Not the answer, but let's say this is my temp array for now, and this is how it's gonna work. I'm gonna say I equal to 0. I'm gonna say while I is less than length of words. Now I'm gonna say, let's say we are making first line here. So first line has, let's say width equals to 0 currently. Now uh, it is always possible, I guess, right? Yeah, it's supposed to be possible. What if I have a 300 length wala word and the max width is no, it's not gonna happen. Okay, that's fine. So let's just say that I'm going to append. No, I'm not gonna append anything. I'm gonna say line equals to empty string, uh, or rather line equal to words of I. Right? I have inserted this word and I've said that the width has increased to length of words of I. Now I'm gonna say while width is less than max width, right? Max width that was allowed. Uh, I have inserted one word into this entire thing. Uh, can I insert another one? Well, if I have to insert another one, I first need to increase the width by one. Um, and the next thing that I want to do is I want to check what is the width of this new word, words of I, if I increase I by one. So I assume I need to increase I by one before this. Yes. Now I say this and this, and I also have to check if I is less than length of words. Right. So now I see that I have increased width by one, and I've said that L equals to length of words. Or let's not increase the width directly. Let's just say L equals to length of words of I plus one.
Now I can simply check if L plus width is less than max width, less than equals to max width. In that case, I can say width plus equals to L, and I can say line dot append words of I, and I can also say I is plus equals to 1. But if it's not the case, then I just break out of the loop. And then when finally I have my I set already, all I need to do is just append line into the temp, and then I can sort of print the temp and return an empty array for now. But I just want to print the temp to see what my temp would be in all of these given cases. So data science is what we understand well enough to explain to a computer is everything else we do. Alright, so it's working, right? I have it there. Now I just need to sort of create this into an answer. Um, so this is my answer. Let's convert this temp into the answer. So we can figure out the number of empty spaces here. We can figure out the empty spaces. How many empty spaces do we have? Um, and To do that, what we can do is for line in temp, okay, we're gonna say L words, number of words means n. Let's say n is gonna be length of line, these many words I have, and there's something else that's gonna be, which is gonna be the WL, let's say, which is 0. I'm gonna say for word in line, um, WL plus equals to length of word. So now I have n and WL word length. So for example, in the first case, it is science is 3, 3, 6, 1, 7, 7 to 9, 9, 4, 13, and to 15. 15, my WL is 15 and N is 4. So 15 and 3, 18 is my count here. So I have two extra spaces after doing everything else. And those two extra spaces need to be filled in the leftmost, right? No, it has to be evenly distributed. So you start with the leftmost part, you give it one extra space, you then give another one another extra space, and you keep on doing that for all the n extra spaces, right? So how I will approach that problem is basically using this simple method, which is um, let's say what I'm gonna do is I'm gonna say uh, I will simply say that see, I have I'll say that new line is gonna be I for I in line, right? Right now I have created a new line. I'm gonna say answer dot append new line, because answer dot append this dot join new line, right? Yes, this is what we're gonna do. Maybe just do a space here. And for this new line, I have this x value, which is basically word length plus n minus 1, and this can be subtracted by the max width. And now I can say uh, while x not equal to x is greater than 0, until then for word for I in range length of new line, let's just simply say new line of I plus equals to empty space, and just subtract x by 1 and check if x is equal to 0, then you just break out of this loop. Otherwise you just keep doing it until for as long as you want, right? um, and this should solve your problem pretty much. Science is what we understand well. Well, there's a problem with the well. The problem is that here the understand is 5 and 5
10 letter word and this is 4, 10, 4, 14, and I have one space which means 15. I still have 5 s- space left. Oh, I need to make sure that I don't put the space in the last word, because that would be stupid. But if it's the only word, in that case, I need to put the space. Yes, otherwise it's gonna be an infinite loop. Hmm. So I have to check if length of new line is equal to 1. In that case, new line of I plus equals to empty space x minus equals to 1. Continue. Otherwise, just go to this loop. I is nothing but 0. And now I really need to take a small potty break because it's really important. Am I missing something? Just pretty cool. What am I missing? I'm missing some extra. I'm having some extra spaces. How is it possible, by the way? Why am I having some extra spaces? Okay, wait. I need to take a break. It's very urgent now. Let's write stuff here. Small break. Let me play some music and mute my audio.
I'm back. I'm back. Let's delete this and yes. Um, we were right here trying to solve this small problem. Slightly tough. What is the problem here? The problem is that हमारा थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? Let's think about it. अगर दो वर्ड्स हैं हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो पहले इवनली भरो. तब तक जब तक तुम इवनली भर सकते हो. अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. आई नीड टू थिंक के गैप्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर कि लेट्स से everything else भी a computer artist में एक. Oh my god, that's thick. That's what he said. One, and then computer computer and dot, which makes up for 9 words. Then there is 3 and 2. Overall I had 20. So this means that 10, 15 and 1, 2, 3, which means 18. Right, 18 are filled. These are 1, 1, 1 gaps. Now I still have two gaps, two spaces. So should I just pull all the two spaces here, or should I evenly distribute those two spaces over this? I think I should evenly distribute, right? And this is going to evenly distribute those two spaces very nicely. So this is good. This is good. X is max width minus WL plus N. N is the length of the line. N minus 1 is the number of spaces. WL is basically the word length, the length of words inside of this line. And max width is the entire width, right? So I need to do minus n plus 1, and this is going to solve all of my problems, hopefully. Yes, it is. It's gonna solve all of my problems. Let's just try out the existing test cases. Oh my god, what the hell? What must be acknowledgement shall be? The last line is shall be instead of shall be because the last line must be left justified instead of fully justified. So last line must be left justified. Last line must be left justified. For j in range length of temp, line equals to temp of j. Let's go till the last line. The last line is supposed to be left justified, which means x equals to this dot join temp of -1 answer dot append x. Should be fine. Plus y equals to length of temp, yl equals to 0 forward in y temp of -1. This is gonna be yl plus equals to length of word, and this is gonna be the max width minus yl minus y plus 1 times of empty space. अभी भी एक empty space कम आ रहा है, ऐसा क्यों?
क्योंकि एक एम्प्टी स्पेस कम क्यों आ रहा है? बिकॉज शेल भी होगा 3 2 5 और 2 7. Y is length of word which is 2. तो मैक्स विड्थ है हमारी 16. 16 में से 7 गया और 1 गया, 8 चला गया, तो 8 आना चाहिए. तो 8 नहीं आ रहा क्या? प्रिंट मैक्स विड्थ कॉमा YL कॉमा Y. 16 में Y is 3. Excuse me. Excuse me. Why is it 3? Because hmm, shall be. It's just 2 words. Temp comma length of temp. Oh, it's not supposed to be length of temp. It's supposed to be length of temp of -1. Um, I'll be very surprised if this approach actually solves this particular problem, because इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा hard coded सा किया है solve, which is kind of ugly, and it's not my favorite thing to do either. Mm, what are the similar questions? Rearrange spaces between the words and stuff. Never mind, it got submitted. I don't know उसको फिर hard में क्यों रखा है अगर वो question ऐसे ही हो जाने वाला था तो. Given row, okay. Google सारे hard question क्यों पूछता है? This is so irritating. I don't know. Given rows cross columns binary matrix filled with zeros and one, find the largest rectangle containing only one and return its area. You have to find the largest rectangle in this matrix which contains only ones. Well, congratulations. You are going to solve this question using uh, this simple DP shit. For I in range rows, so I've created this DP array, and now I'm going to say for I in range rows, for j in range columns, I'm gonna say if I equal to 0, or it doesn't really matter. Rectangle चाहिए ना? हाँ. What is the largest rectangle? तो DP क्या होगा? अगर currently position पे 1 है तो largest rectangle होगा maximal rectangle containing one and return its area. अच्छा, स्क्वायर के केस में तो बहुत सिंपल था, बट रेक्टेंगल के केस में थोड़ा सा अलग है. थोड़ा सा अलग वो ये है, हम्म 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 uh,
ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा और ये मुझे लगता है मैं करने वाला भी नहीं हूँ। इसको करने का सिंपल तरीका ये है, मैं अप्रोच समझाने की कोशिश करता, ठीक है। अम, इसका अप्रोच क्या है? अप्रोच ऐसे है कि जो हमको मैट्रिक्स दी हुई है, ओके। बेसिकली ये है, क्वेश्चन है लार्जेस्ट एरिया रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। और उसको करने का तरीका ये है कि हर स्टेप बाय स्टेप जाओ और उसको एक हिस्टोग्राम बनाते जाओ। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रो को हिस्टोग्राम समझ लो, 1 0 1 0 0, where this is the length of the bar in the histogram, and then we can find out the largest area rectangle in this histogram. Um, the largest area rectangle in this histogram can simply be calculated using the prefix and suffix arrays. So for example, for row equal for third row, we're gonna have a histogram of length 3, 1, 3, 2, 2, which in picturization, if I try to create that histogram, it's gonna look something like this, until 3, then we have 2, and we have 2. So this is how the histogram will look, okay. Now I have to find the largest area rectangle, and to find the largest area rectangle, what I'm supposed to do is basically, for every bar, I'm gonna assume that this is a part of my rectangle, and if this is a part of my rectangle, then the largest area for this bar is basically going to be um, the area including this bar, which can be find out if I know which is the leftmost bar, the index of the leftmost bar that is smaller than this, and the rightmost bar which is smaller than this. So in this case, it is going to be 0, 1, 2, 3, 4, 5, and basically for this the width is going to be 1 minus 0, which is 1, and the height is going to be 3, so it's going to be 1 cross 3, area is 3. Now for this one, the smallest bar is going to be nowhere found, so this is going to be 5, this is 0, so this is going to be 5 once again. And for this one, the smallest bar is right here, and the smallest bar is here, so once again the area is going to be just 3. For this one, the smallest bar is here, the smallest bar is here, so it is going to be 3 times 2, 6. So our answer is going to be 6 for the row number 3. Similarly, I can do that for all the rows and figure out what is the maximum answer in the entire matrix, and that would be the largest rectangle inside of that matrix. So I know how to solve this problem, and I haven't solved this problem ever, mainly because I thought that solving this problem isn't that interesting at all, because I know how to solve it. So yeah, this is similar to having the max area in histogram kind of stuff. Uh, like, no, uh, I'm trying to copy everything, but I doubt if this is gonna work. Uh, so this is the main function, max histogram rectangle area. So for the entire matrix, I will simply create the max histogram area, and the answer would be the maximum of that. And to get the max histogram rectangle area, I can use two stacks, or I can just use one stack. Let's see how are they actually using just one stack. They're saying that for I comma h in heights, let's start from I, while stack and stack का top वाले का element is greater than the height. In that case, you pop from the stack, and the area is area comma height into I minus index. Just continue doing that. ये हम already कर चुके हैं. It's not that tough. Let's talk about complete tree nodes. इससे पहले एक बार हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं. टू सम फॉर एग्जांपल, टू सम इज़ वेरी सिंपल. देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, वन ऑफ देम इज स्लाइडिंग विंडो सॉर्ट करने के बाद, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम. Insert interval could also be a simple problem if you instead of inserting the interval, you insert it and then merge interval. It's basically merge interval, which can be solved using a simple DQ. Then there is max minimum window substring.
which is also a hard problem, which says the minimum window, which includes everything. So in this problem, you just have this formed and required stuff and make a window and then try to solve the problem. Now we're on the complete count tree nodes. But other than that, there is find median from data stream, which is also a simple problem. If you use two heaps, you can simply find the median also. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, which is very good because हमारे लिए थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है अगर हम इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी तो. Now this is count complete tree nodes. Given the root of a complete binary tree, return the number of nodes in the tree. According to Wikipedia, every level पे except possibly at the last is completely filled in a complete binary tree, and all the nodes in the last level are as हाँ. So design an algorithm that runs in less than O(n) time. Given the root, return the number of nodes. ओह O(n) टाइम से कम में, तो O of H में कर सकते हैं एल्गोरिदम काम. O of H में कर सकती है क्या कोई? बोल रहा है O of N से कम में होना चाहिए. अब ये कंप्लीट ट्री है, ठीक है. I'll tell you how it's gonna work. So for every node, if it has a right node, then it's definitely gonna have a left node. Very good observation, but I don't think it's very useful at all. What else can we do to get the height? Okay, after solving this question, I'm gonna work on the case study, which is something that I have to prepare for the class. तो ठीक है, ये वाला काम हम करेंगे, ठीक है. बिकॉज लीडरशिप में हमको लेके जाना है. कंप्लीट नोट्स निकाल, कंप्लीट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं. ओके. कॉल. हाँ बोलो. हाँ बोलो. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. क्या हुआ? हम्म. क्या? हम्म. 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 हाँ मैं स्ट्रीम कर, तुम एक काम नहीं कर सकती जाके नोट्स बना लो चुपचाप से लीडरशिप के लिए? मैम ने अभी बोला कि केस स्टडी में कैसे आओगे बिना नोट्स के तुम? नहीं मतलब हाँ बनानी हो, वरना केस स्टडी कैसे करेंगे? चलो लाइट लो, मैं खुद ही बना लूंगा. अरे पर केस स्टडी में सेम चीजें थोड़ी ना बोलेंगे, वो जो बोलेगी वो मैं थोड़ी ना बोलूंगा. ठीक है तुम लाइट लो, मैं बना लूंगा. चल 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 चल. ओके. तुम्हारी मर्जी है. देखता मैं वीडियो ऐसे कर रहा. बाय.
क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। बाय। ठीक है, बाय। I'm sick of some people around me. Anyways, design an algorithm that runs in less than O of n time complexity. ओके, तो क्या करेंगे हम? O of n में काम करने वाली एल्गोरिथम बतानी है। हम्म uh, hmm 1 2 3 4 5 6 design an algorithm that runs in O of n time. O less than O of n time. uh, अगर कोई ट्री ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें नंबर ऑफ नोट्स बतानी है। तो नंबर ऑफ नोट्स लीफ नोट्स काउंट करूं? नहीं, तब तो लूप करना पड़ेगा ही। लीफ नोट्स नहीं कर सकता काउंट। मैक्सिमम हाइट काउंट करूं किसी तरह तो मैक्सिमम नोट्स पता चलेंगी, नंबर ऑफ नोट्स कैसे पता चलेगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। क्या करना चाहिए? हाँ। हम्म, आ, हाइट निकालने के लिए तो मैं लिटरली बस लेफ्ट मोस्ट चला जाऊंगा तो हाइट निकल आएगी हर बार। हाइट हाइट निकल आएगी, पर हाइट से मैं लीव नोट्स कैसे निकालूंगा? आ, कर मैं हम्म 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 अगर ये बड़ा सा कंप्लीट बाइनरी ट्री है
तो इसके नीचे भी बाइनरी ट्रीज होंगे कंप्लीट वाले। तो हाँ, number of nodes in this binary tree would be number of nodes in this one plus number of nodes in this one, right? एक ही मेथड मेरे को समझ आ रहा है कि मैं प्रूनिंग कर सकता हूँ ऐसे कि अगर राइट में पूरे नोड्स हैं तो लेफ्ट कैलकुलेट मत करो, वहीं से आंसर निकाल दो। ऐसे डेफिनेटली ओ ऑफ एन से कम लगेगा, बट इसके अलावा तो मुझे कुछ और लग नहीं रहा है। इसके अलावा क्या ही लगता है, कुछ नहीं। थोड़ी सी प्रूनिंग हो सकती है। प्रूनिंग के अलावा क्या करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रूनिंग कर सकते हैं कि अगर राइट में इतने नोड्स आ गए तो लेफ्ट कैलकुलेट मत करो, है ना? बेसिकली मैं लेफ्ट राइट में कितने नोड्स हैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, हर नोड के राइट में कितने नोड्स हैं, इसके राइट में कितने नोड्स हैं, फिर मैं इसके राइट में कितने नोड्स हैं, फिर इसके राइट में अगर नोड्स है ही नहीं तो एनीवेज फिर इसके राइट में कितने नोड्स हैं, इसके राइट में कितने नोड्स हैं, इसके राइट में अगर ज़ीरो है और इसका लेफ्ट है ही नहीं तो ये रिटर्न कर दिया वन। फिर इसके राइट में नोड्स हैं वन, तो क्या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इधर एक लीफ नोड है तो उससे कुछ नहीं होगा। अह, वेरी वियर्ड। अरे ओ एन क्यों दे रहे हो भाई, नूप आदमी। ओ एन थोड़ी ना करना है हमको, लॉग एन इंटू लॉग एन। नाइस। Use combination of perfect binary tree and normal binary tree. Test the maximum length of left side of and right side of the node. Compare the length. If they are equal, it means subrouted tree. There is no perfect, and we can use it to length minus one. If they are not equal, just one plus count dot left, count dot right. अच्छा, ये भी थोड़ा सा बेहतर है, मतलब स्लाइटली प्रूव्ड। ये भी एक तरीके से प्रूनिंग ही करी है, बस थोड़ी सी बेटर है। क्या ये बेटर है किसी भी फॉर्म में? नहीं, इट्स द सेम शिट जो मैं बोल रहा था, ठीक है। नथिंग रियली फैंसी और एनीथिंग लाइक दैट। तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं रूट इज नन, रिटर्न जीरो, हाइट ऑफ लेफ्ट इज जीरो, कर इक्वल्स टू रूट while कर is not none, कर equals to कर dot left, height of left plus equals to 1, height of right equals to 0, कर equals to root while कर is not none, कर equals to कर dot right, height of right plus equals to 1, and if height of right equals to height of left, return 2 times height of left minus 1, else if that's not the case then return 1 plus direct dot count nodes.
for root dot left plus self dot count nodes for root dot right. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tree visualizer. नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 7. तो अगर कंप्लीट है तो कितना है? हाइट को 1 से इनिशियलाइज करूँ क्या? ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अरे भाई ये गलत कर रही हो तुम. 2 की पावर एच ऑफ एल होगा ना. 2 की पावर एच ऑफ एल माइनस 1. सॉरी. चलो ये माई लिस्ट का एक और अजीब सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अजीब सा इन द सेंस इट वाज अ स्लाइटली वियर्ड प्रॉब्लम. ये क्या है? क्लोजेस्ट बाइनरी सर्च वैल्यू. हाँ नहीं मत करने दो. ठीक है जाओ. हर चीज में यही होता है. hmm. You're playing the bulls and cows game with your friend. You write down a secret number and ask your friend to guess what number it is. When your friend makes a guess, you provide a hint with the following info: the number of bulls, which are digit in the guess that are in the current position; the number of cows, which are digit in the guess that are in your secret number but are located in the wrong position; specifically, the non-bull digits in the guess that could be rearranged such that they become bulls. Given the secret number and your friend's guess, written the hint for your friend's guess. The hint should be X A Y B, where X is the number of bulls, Y is the number of cows. Both secret and guess में contain duplicate digits. ये क्या लिखा हुआ है? 1A3B bulls and वो. अच्छा. Number of bulls which are digit in the guess that are in the correct position. वो bulls हो गए. Then digits in the guess that are in your secret number but are located in the wrong position. Hmm. Hmm.
तो ये तो ऐसे हो जाएगा, bulls equal to 0 for I in range length of maybe I equal to 0, j equals to 0, while I is less than length of secret and j is less than length of guess. नहीं, secret और guess दोनों की length बराबर थी तो fuck it. For I in range length of secret, if secret of I equals to guess of I, in that case you say bulls plus equals to 1, else you say s equals to, let's say, an empty array and g equals to an empty array, and right here you would say g dot append guess of I, and let's also have a hash map which is gonna say a hash map of secret of I is hash map dot get secret of I comma 0 plus 1. Answer equals to 0, return answer. Answer is not 0, answer is going to be something crazy. Let's say cows equals to 0. Now you have to loop over the guess. Therefore, I in range for I, actually for let's say g in get, for I in range length of g. ठीक है? You might want to say that cur is g of I, and you can say if hash map of secret of actually cur hash map dot get cur comma 0. If this is not equal to 0, if this is not equal to 0, then cows plus equals to 1, and this hash map of cur is subtracted by 1, and then you have to return let's say string of bulls plus a plus string of cows plus b. The next input that I have is this. The last thing that I want to check is basically if this has one more 1 and it has something like 3 here, and this has something like 8. Now this one has matched and these two ones are there. That's all. Weird question. Count of smaller number after self. तो भी टफ नहीं होते हैं. I'm able to solve a lot of problems these days. Yeah, थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन करने के बाद I feel happy. ओ भाई 292 हो गए हैं. I'm there. I'm about to solve 300 lead code problems. कुछ समय में मैं 300 सॉल्व कर चुका हूँ. अभी टॉप 17% में आता हूँ मैं. जल्द ही मैं और थोड़ा बेटर सिचुएशन में आ जाऊँगा. एक ही तो कॉन्टेस्ट किया मैंने. 2 ही सॉल्व हुए थे. वीकली कॉन्टेस्ट 22. कोई पुराना वीकली कॉन्टेस्ट करें क्या? आसानी से हो जाएंगे 3 क्वेश्चन. हो जाएंगे क्या? ट्राई करेंगे. ओके, स्ट्रीम पे कभी तो, बस अभी नहीं. अभी नहीं. ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे क्या?
करेंगे करेंगे ट्राई करेंगे। अदर देन दैट और क्या है हमारे पास? गिवन एन इंटीजर array nums, return an integer array counts where counts I is the number of smaller element to the right of the nums I. Smaller elements to the right of the nums I. स्टैक बना के कर लो, इसमें क्या है? नहीं, 5 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं? दो, ऐसे बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अरे वाह, इसको तुमको ओ ऑफ लॉग एन एन लॉग एन में करना पड़ेगा। क्या रिपीटेड एलिमेंट्स हैं? अरे यार, रिपीटेड एलिमेंट्स हैं और मुझे बताना है कि कितने होंगे स्मॉलर नंबर आफ्टर सेल्फ। हम्म, इंटरेस्टिंग। Return an integer array counts where counts is the smaller element to the right of the nums of I. Okay. 5261. Smaller elements to the right of I. Count of elements that are smaller. तो अगर मैं ये निकाल लूँ काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर बिगर, तो मैं आसानी से उससे निकाल सकता हूँ कि स्मॉलर कितने हैं। ठीक है, मुझे निकालना चाहिए काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर बिगर देन दिस, राइट? काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर बिगर निकालने का तरीका क्या है? 5261 एक एरे है। 5261 काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर बिगर ऑन द राइट साइड। अच्छा। काउंट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर बिगर निकालने का मैं जो भी मेथड समझ रहा हूँ, स्टैक्स, स्टैक वगैरह, all of them will be O of n square. It's not worth it. Okay.
Hmm. 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 Very interesting problem. I have no idea what to do. Hmm. क्या इसको किसी और तरीके से करना चाहिए instead of thinking of this as an array? Mm-hmm. 5, 2, 6, 1 बाइनरी ट्री बना सकता हूँ. 5 से छोटे एलिमेंट्स कितने होंगे? हाइट ऑफ दिस ट्री. 2 से छोटे कितने होंगे? हाइट ऑफ दिस ट्री. हाइट निकालने का तरीका क्या होता है? ओ ऑफ लॉग एन. तो बाइनरी ट्री बना लूँ. यस, आई एम द बेस्ट. जस्ट मेक अ बाइनरी ट्री. पर ये सेगमेंट ट्री, मर्ज सेट, ऑर्डर्ड सेट, ये सब क्या है? हेल्प. मैं तो बाइनरी ट्री बना के सोच रहा था कि एक नॉर्मल सा बाइनरी ट्री बना लूँ विथ उसमें एक और चीज़ हो जाएगी. नोड में मैं काउंट भी स्टोर करा लूँगा कि कितने बार आ रहा है, उसकी काउंट इंक्रीज करते जाऊँगा. उसके बाद कोई मेरे से हाइट पूछेगा तो हाइट बता दूंगा तुरंत. मैं तो यही सोचा. काउंट ऑफ स्मॉलर नंबर आफ्टर सेल्फ. ये सेगमेंट ट्री क्या होता है बाय द वे? बाइनरी सर्च से ऐसे कर लेंगे, इसको सॉर्ट कर दो. नहीं, सॉर्ट नहीं कर सकते. बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे? आगे का एरे सॉर्ट कर दो और उसमें बाइनरी सर्च लगा दो, तो एन लॉग एन में हो जाएगा. एन लॉग एन में हो जाएगा. ठीक है. यस, बाकी का सॉर्ट करके बाइसेक्ट लेफ्ट कर दो तो एन लॉग एन में हो जाएगा. उसके अलावा क्या मेथड है इसका? जो बाइनरी ट्री वाला है जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या है? सिंपल बाइनरी सर्च इज फास्ट इनफ. रिकर्सिव सेगमेंट ट्री. ये सेगमेंट ट्री क्या होता है? क्वेरी रेंज सम. ये रेंज सम के लिए होता है सेगमेंट ट्री. अच्छा. रेंज सम क्वेरी लगाने के लिए सेगमेंट ट्री का यूज करते हैं. क्या हमें सेगमेंट ट्री पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई करते हैं. Hello friends, my name is Tushar and today I'm going to talk about Fenwick tree or binary index tree. Before going into the details of what Fenwick tree is, let's look at the use case which Fenwick tree is trying to solve. So Fenwick tree is used to get prefix sum of an array. For example, if I'm given an array of 7 elements from 0 to 6, so Fenwick tree will help me answer queries like what is the sum from 0 to 4? So the sum from 0 to 4 is 3 plus 2 5, 5 plus 6 11, 11 plus 5 16. What is the sum from 0 to 6? So the sum from 0 to 6 is 16 minus 1 15 plus 2 17. So queries like this is why I use Fenwick tree. What are the other alternate solutions if we did not use Fenwick tree? One solution is to keep a prefix sum based array. So for 0 it's the sum till 0 is 3. For 1 the sum till 1 is 3 plus 2 5. For 2, the sum till 2 is 5 plus 0, 5. Sum till 3 is 5 plus 6, 11. Sum till 4 is 11 plus 5, 16. 16 minus 1, 15. And 15 plus 2, 17. And this would also help me answer the same query. What is the sum from 0 to 4? And you directly go here and that's 16. What is the sum from 0 to 6? And that's 17. But the problem with this approach is if there are many updates in the original array,
it takes, for every update, it takes O of n time to update this array. So if an array is large and if there are many updates in an array, this prefix sum based array doesn't scale very well. Another possible alternate is to use segment tree. If you don't know what segment tree is, I have another video going over the details of segment tree and you can watch that video. The problem with segment tree is it's slightly more complicated. It takes, in worst case, 4 of n space to store segment tree for n elements in an array, and in worst case it takes 4 of log n time to search to do a range sum query in a segment tree for an array of size length n. So this is where Fenwick tree comes into the picture. The space it takes to store Fenwick tree is O of n. The amount of time it takes to search into Fenwick tree is O of log n. The amount of time it takes to update every element in Fenwick tree is O of log n, and the amount of time it takes to create a Fenwick tree for the first time is n log n. Next, let's look at the implementation details of Fenwick tree. So now I'm going to create a Fenwick tree based on a given array. So I'm given an array of 11 elements starting from index to 10, starting from index 0 to 10. So my Fenwick tree will go from index 0 to 11, one more node than the actual array. So let's see how I built this tree right here. So this is a conceptual tree. My actual tree will be stored in a form of array, but this is easier to understand, which is why I have it this way. So 0 is a dummy node and doesn't store any information, and rest of the nodes 1 to 11 will store the prefix sum. Why I have the tree this way? Let's look at it. Why 0 is parent of 2? If you look at the binary representation of 2, that's 1 0, and if you flip the rightmost set bit, it becomes 0 0, which is 0, which is why 0 is parent of 2. If you look at binary representation of 8, that's 1 0 0 0. If you flip the rightmost set bit, it becomes 0 0 0 0, which is again 0, which is why 8 parent is also 0. If you look at 10, binary representation of 10 is 1 0 1 0. If you flip the rightmost set bit, it becomes 1 0 0 0, and this is 8, which is why 10's parent is 8. Let's look at 11. 1 0 1 1. If you flip the rightmost set bit, it becomes 11 is 2 raised to 3 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 0. 5 is 2 raised to 2 plus 2 raised to 0. So Fenwick tree uses this information to store the prefix sum. Let's see how this works. As I said, 0 is a dummy node, so the only information it has in its node is 0. Let's start with 1. 1 can be represented as 0 plus 2 raised to 0. So what I'm saying is, in my original array, starting from index 0, the sum of next one element will be stored at 1, so 3. And I'm indicating that the range sum of range 0, 0 is stored at 1. Let's look at 2. 2 can be represented as 0 plus 2 raised to 1. So again, starting from 0, the sum of next two elements will be stored at 2. So 3 plus 2 is 5, and this is 0, 1. Let's look at 3. This is 2 plus 10 is stored at 4, and this is 0, 3. Let's look at 5. 5 is 2 raised to 2 plus 4, 4. 6. So that's 19. Alright, so hopefully you understood how I created this tree. I did not show you the efficient way of creating this tree, but hopefully this gives you an idea how I filled up the nodes of this tree using the prefix sum. So next, let's look at how we are going to search into this binary index tree. So our aim is to get the prefix sum given a range. So for example, give me the prefix sum from 0 to 5. So we want to get this prefix sum 0 to 5. So to get the prefix sum, you got to start from node 6. Because the end is 5, you start from 6. You go to node 6, you take that value 9, so the value here, so 9, plus you go to its parent. So to go to the parent of 6 from 4, all you have to do is flip the rightmost set bit,
So you come here, so that's 10, and then you flip the rightmost side bit and you reach 0, so that doesn't add anything, so 19. So 19 is the sum from 0 to 5 in my original array. So let's look at another example. Let's try to get sum from 0 to 9. So 0 to 9, so since this is 9, I'll start from the 10th node in my Fenwick tree. So I start from 10. So the value here is 9, plus I go to its parent, so that's 19, and then I go to its parent, so that's 0, so that doesn't add anything, so this is 28. So the sum of 0 to 9 will be 28. Why this works is, let's see why it would work. If we're trying to get the sum from 0 to 9, we know that this 10th node here is storing the range 8 comma 9. So 8 comma 9 of this 0 to 9 is stored at 10. Also, we know that its parent 8 is storing the range, a sum of range 0 to 7. Sum of range 0 to 7 is stored at 8. So the sum of range 0 to 9 is the sum of range 0 to 7 plus 8 comma 9, which is 8, 9 plus 19. Let's look at another example. So I was trying to get the sum from 0 to Welcome to Stable Sort. In this episode, we're going to discuss a data structure called Fenwick tree, also known as binary. मुझे ऑलमोस्ट कुछ भी समझ नहीं आया इसमें से, बाय द वे, नॉट इवन किडिंग. Welcome to तो ये वाले क्वेश्चन को हम फेवरेट में डाल के आगे पढ़ेंगे, because I have no idea how to solve it. Haha, that's funny. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमें नहीं पता. एनीवेज इट्स 9:44. हमारा ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का स्ट्रीम हो चुका है अभी के लिए. आई थिंक इट इज़ all I could have done for now. So let us stop here with the stream. I have a class at 10 microeconomics, though I'm not sure if I should go there because microeconomics. I don't really like microeconomics. I have another plan to create notes for leadership. And how about I don't go to class and instead just create notes for leadership? That would be really interesting in the 10 to the 11 slot. So let's not go to microeconomics. Instead, let's create notes at 10. तो एक काम करते हैं, चलो let's solve one more question and then we can call it a off, not day but call it a off. Okay, ये तो logger rate limiter को लाइट लो, ये हम कर नहीं सकते. डिज़ाइन हिट काउंटर भी ऐसे ही होगा फिर, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं. देखा, डिज़ाइन हिट काउंटर लॉगर रेट लिमिटर, देखें क्या, लॉगर रेट लिमिटर लीड कोड, डिज़ाइन हिट काउंटर लीड कोड, ये कहीं और मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं. डिज़ाइन हिट काउंटर लॉगर रेट लिमिटर. ओके, design a logger system that receives a stream of messages along with its timestamp. Each message should be printed if and only if it is not printed in the last 10 seconds. Given a message and a timestamp, the return true if the message should be printed in the given timestamp, otherwise written false. It is possible that several messages arrive roughly at the same time. So example, you created new logger. Logger should print message 1, comma 4. It returns true. 2, comma bar returns true. 3, comma 4 returns false because last 10 सेकंड में प्रिंट हो चुका है वो. तो ये तो हैश टेबल से हो जाएगा. सिंपल, नॉट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. डिज़ाइन हिट काउंटर, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है. मैक्सिमम ऑफ रेक्टेंगल नो लार्जर देन के, ये बहुत टफ होने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर. व्हाई एम आई लुकिंग एट दिस क्वेश्चन? देखा, कुछ स्लाइटली इजी प्रॉब्लम नहीं है क्या? डिकोड स्ट्रिंग, ये भी हार्ड लेवल है क्या? नहीं, ये मीडियम लेवल है. डिकोड स्ट्रिंग स्लाइटली इजी है. मैंने ये सबमिट नहीं किया क्योंकि मेरे से हुआ नहीं, पर ये हो जाएगा यूजिंग बैक ट्रैकिंग.
हम्म ये करते हैं, चलो ठीक है। और डिजाइन इट काउंटर क्या है? ईच फंक्शन sum the time stamp as a parameter and you may assume that calls have been made in chronological order. uh, Number of hits received in the 5 minutes. ये तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। के इनकोडिंग का मतलब है के टाइम्स आएगा वो, ठीक है। डिफाइन डी कोड, इसमें स्ट्रिंग दूंगा, इंडेक्स दे दूंगा और कर दे दूंगा। कर क्या हो रहा है? ओके, कर देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे लाइक। हम बोलेंगे if index is greater than equal to length of s, तो रिटर्न खाली स्ट्रिंग। एनीवेज यहाँ पे रिटर्न डिकोड ऑफ s, 0। यहाँ हम बोल देंगे कि इंडेक्स से शुरू हो जाते हैं और until we find the opening bracket, let's continue doing the same shit। जिसका मतलब हुआ जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक सेम चीज़ करो। ओपनिंग ब्रैकेट आए तो 3 टाइम्स ऑफ उसके अंदर वाला सॉल्व कर दो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो जस्ट इग्नोर द फक आउट ऑफ दैट शिट। रुको, क्या बोल गया मैं? बहुत कुछ बोल गया मैं, रुको। मैं कह रहा हूँ कि आई इक्वल टू इंडेक्स बोल के वाई आई नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, राइट? जब तक आई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं पहुंचा था तो मैं क्लास नहीं जा रहा। नो, मैं क्लास नहीं जा रहा। नो थैंक्स यू। बी एस ए ग्रेटर देन क्लास। आई डोंट नीड सी जी, आई नीड अ जॉब। चुपचाप पढ़ने दो, हम कहीं नहीं जा रहे। क्लास व्लास हमको टीएसए कर लें। नींद आ रही है। मैं बोल रहा जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना आए तब तक तुम आई को बढ़ाते जाओ। जब ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए तो तुमको पता चल जाएगा x इक्वल टू एस ऑफ इंडेक्स से लेकर के आई तक। हम्म, ये लो, ठीक है। अब इसमें बस एक चीज़ और लगा दो, इफ इंडेक्स पे अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इंडेक्स को एक बढ़ा दो। अरे
ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही कुछ वियर्ड सा कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? रेजेक्स फ्लेक्स, कौन सा रेजेक्स? क्या? कुछ भी बोलोगे? अरे अरे, आई अगर इसके बराबर हो जाता है तो आई को मत लो, फक इट। वो प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। एक बार प्रिंट करा के देखो एक्स को। प्रिंट एक्स, ऐसा क्या आ रहा है जिसको ये गलत बोल रहा है? 3 आ रहा है और एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। मेरा अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो क्या करूं? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो क्या करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो क्या करना है? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, और क्या। x is an empty string if length of x dot strip स्ट्रिपिंग करो तो रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ नहीं आया। क्योंकि x एम्प्टी स्ट्रिंग तुरंत हो जाएगा। फाइनली हमको लिख के देखना पड़ेगा, चलो लिख के देखते हैं, ठीक है। 3a 2b c। अब हम शुरू करेंगे i इक्वल्स टू 0 से। पहले इंटीजर आ रहा है 3, तो 3 के लिए बाकी का सॉल्व करो। बाकी का सॉल्व नहीं करना चाहिए हमें सॉल्व करना चाहिए बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, इजंट इट? क्योंकि बाकी के में 3 का मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में करेंगे। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर बाकी का सॉल्व करो पे देना चाहिए, प्लस डी कोड ऑफ अगेन द नेक्स्ट इंडेक्स। ऐसे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ब्र why did I even write 3 into directly? ठीक है, तो इसका फिर तो अपडेट कर देते हैं कोड, ये तो आसानी से हो जाएगा। इसको हटा के डायरेक्टली एक बात देखते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक का देखो और वो जो भी आए उसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो ये भी हटाओ। अब पहले ओपनिंग ब्रैकेट तक जाओ और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट तक जाओ तो हो जाएगा। पहले ओपनिंग ब्रैकेट तक और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट तक। तो सबसे पहले क्या करूँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेट्स से i इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। और टेम्प इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग, इसमें मैं करेंट स्ट्रिंग स्टोर करा लूँगा। i इक्वल्स टू इंडेक्स टेम्प इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग, while I is less than length of s, if s of I डॉट इज डिजिट मतलब कि वो डिजिट है। अगर वो डिजिट है, इफ नॉट, लेट्स से अगर वो डिजिट नहीं है तो सिंपली टेम्प में प्लस इक्वल्स टू एस ऑफ आई। while I is less than length of s, if s of I डॉट, अगर वो डिजिट है s of I डॉट इज डिजिट, ऐसे करेंगे तो कैसे हो पाएगा? मेरे हिसाब से हमको पहले करना पड़ेगा while true if s of I is डॉट इज डिजिट, अगर ये डिजिट है काउंट इक्वल टू 0, एस ऑफ आई अगर डिजिट है तो काउंट प्लस इक्वल्स टू इंट
s of I into 10 3 फिर 4 आया तो hmm uh, hmm while I is less than length of s and s of I not equal to opening bracket तब तक I plus equals to 1 ठीक है तो nm equals to s of इंडेक्स से लेकर के I तक जाऊं ठीक है प्रिंट nm 3 आना चाहिए यहाँ पे 3 आ रहा है तो int of nm नहीं हो पाएगा ठीक है तो nm जो है वो क्या हमारा ये अब टेम्प में भरना है तो while I is less than length of s and s of I not equals to n closing bracket s of I not equals to a closing bracket or s of I dot is digit s of I अगर digit नहीं है s of I ओपन ब्रैकेट भी नहीं है और डिजिट भी नहीं है ठीक है दोनों ही नहीं होना चाहिए तब तक ठीक है रिटर्न num टाइम्स ऑफ अगर वो डिजिट हो गया तब तुम क्या करोगे दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर वो डिजिट हो गया तब मैं क्या करूँगा I am slightly overwhelmed right now. Let's stop the stream and we will restart the stream in the evening. अगर टाइम मिलता है तो अभी के लिए इतना काफ़ी है. Let's focus on creating notes for the leadership and there is something new that has been added for today, which is I have a quiz
of computer graphics today from 7 to 7:30. Lecture 1 to 5. Please bring some empty sheet to write your answers. लग गए 1 to 5. तो मेरे को ये पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे लेक्चर्स, पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी इन सारे लेक्चर्स की बिफोर द क्लास। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमें